Hey, कैसे हैं सब लोग इस amazing Friday evening में? I see a couple of people already waiting on the chat. That's awesome. That's awesome. Hold on, just a second. And what's up? Prabhat Mayuk, how you doing? Electrochemistry आज हम लोग करने वाले हैं. Excited? This is a fun chapter. It seems very scary, but आज का session आप देखेंगे and the kind of questions have come in the past, and I'm sure the fear will go away. इसमें कुछ equations बहुत ढेर सारे हैं, right? There are broadly two parts of this chapter, electrochemistry में. आवाज आ रही है? रुकिए, हमने mic नहीं पहना. What's up, Mayuk? Oh, funny things. So, hold on, just give me a second. There's basically the chapter has two parts to it, right? The first part is where you have Nernst equation, all of those things. The second part is when you have what you call it, conductivity, conductance, and all of that, right? So in those parts में बहुत ढेर सारी equations तो हैं, and you got to be careful about units, especially in the second half, right? But it's very doable. I think much easier than thermo or equilibrium, right? What do you think? What do you think? What do you guys think about that? Hey, Asta, Lavanya, Lakshya, Mayuk, सब लोग, are you all good? Shall we get started right away? Hey, Hare Krishna, Saloni. Let's start off with the first question जो इसी साल के नीट में आया था. Yeah, the conductivity of a centimolar solution. This is the part that a lot of you are scared of for some reason, right? But that's gonna go away. You have a great teacher in physics in Mrinal and Abhishek ji, right? And they have taught you these basics of electricity very well. वही चीज यहाँ पे आ रही है. I'll show you very quickly. खैर, I'll read a question for you. The conductivity of a centimolar solution of KCl at 25 degrees Celsius is 0.0210 ohm per centimeter, or you can say mho, right? There is something of mho, which is ohm inverse per centimeter, mho per centimeter, ये भी बोल सकते हो. And the resistance of the cell contained solution at 25 degrees Celsius is 60 ohm. Okay, ये resistance दिया हुआ है. The value constant is, the value of cell constant is, अच्छा यहाँ cell constant दिया हुआ है. देखो, something very basic asked in the question itself. What do you guys think? Option B, easy. Mayuk, look at that. Nice. Nice. Hey, Lakshya, Prabhat. Look at that. बहुत जल्दी दो लोग आंसर देते हुए, बाकी लोग कहाँ गए भाई? आंसर दो, बताओ. Yeah, according to Mayuk, this is an easy question. What do you think? Is this easy? Is it hard? Well, here's the thing, right? अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो बहुत जल्द भी हो जाएगा. अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो डर भी सकते हैं. You can get scared pretty easily, right? लावण्या, आस्था, all of you saying B, awesome. B. चार लोगों ने भी बोला, बहुत अच्छी बात है. खैर, मैं बोल रहा था कि बहुत सिंपल है ये आइडिया, ये पूरा पार्ट एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इनफैक्ट दिस इज इजियर इन द फर्स्ट हाफ. कैसे? You know that resistance is equal to rho L by A. Okay, rho is resistivity, L by A is your cell constant, जिसको कभी कभी कोचिंग मॉड्यूल्स में कहीं और पे G स्टार भी बोलते हैं. G स्टार. और G क्या होता है? G is कंडक्टेंस यानी कि 1 by R, और कापा यानी कि कंडक्टिविटी इज 1 by rho. That's it. देखो, इनवर्स किया, हो गया काम खत्म. That's it. That's all you need to do. A quick trick of units is what Mayuk says. NEET, आप बोल रहे हैं कि NEET aspirant, आप बोल रहे हैं D. Let's see what the answer is. Look, तो यही चीज जो मैंने लिखी है, you basically invert these equations, okay? And you keep L by A as it is. आप L by A हटाना नहीं चाहते. Keep L by A here. Take rho to the other side. Take R to this side. Okay. So what you get is G is equal to kappa times L by A, right? So G, हाँ, यही तो मिल रहा है. क्या मिल रहा है आपको? G is equal to, यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है? Hold on, let me think. No, उल्टा बोला मैंने. Kappa is equal to G times L by A और G times G star. ये भी इक्वेशन होती है, बहुत इक्वेशन याद करनी होती है, बट नहीं, I'm just trying to tell you, it's the same equation. And then you just multiply these two guys and you get 1.26. तो आंसर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? But sometimes people get lost in the formula. And here's me proving to you कि formula is very direct, okay? The only thing you need to know is this guy right here. Rho equal R equal to rho L by A, and ये आइडिया कि G जो कंडक्टेंस है 1 by R है, right? रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का इनवर्स है कंडक्टिविटी, which is kappa. Shall we go on to the next one? इसका आंसर 1.26 था. Great work on getting this right. NEET aspirant, did you get this one? अगला सवाल देखते हैं. This is very direct, okay? Assertion reason, आप लोग का favorite type of सवाल. In equation delta G of a reaction equal to minus NFE cell, value of delta G depends on N. Oh, that's the assertion. Reason is E cell is an intensive property and delta G is an extensive property. थोड़ा सा थर्मो का आइडिया यहाँ पे आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि before doing electrochemistry you need to do thermo, you need to do equilibrium, and equilibrium करने के लिए भाई you need states of matter, but it's okay, states of matter के बिना भी ये कर सकते हैं. Ionic equilibrium काफी है, ठीक है? In the light of the above statements,
choose the correct statement from the options given below. अब क्या बोल रहे हैं आप लोग? B, Abhinandan and Mayuk are both saying B कि A is true but R is false. Okay, ठीक है. Two of you are saying B. Radhika also saying B. अरे बहुत lot of you saying B. अच्छा, B false क्यों है? मतलब रीजन false क्यों है? मुझे तो रीजन सही लग रहा है. मुझे तो रीजन सही लग रहा है. क्यों? देखो, डेल्टा G is extensive क्योंकि डेल्टा G is dependent on number of electrons that take part in that reaction. So, if anything is dependent on the mass of things, then it will depend on, yeah, it's an extensive property. Also, हमने बहुत डिटेल में इसमें थर्मो में बोला था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि इफ आई गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन से कि अच्छा या इस पॉइंट की इंटेंसिटी इट्स पॉसिबल फॉर मी टू दैट. एक्सटेंसिव में यू कांट डू दैट. यू हैव नो आइडिया उस वैल्यू उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है हियर और हियर. दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास वो भी था, बट ये भी मैंने आपको सिखाया था थर्मो में. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं. थर्मो को हुए 1-2 महीने हो गए. खैर, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, ठीक है. एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यही तो है. द आंसर इज डी हियर. ओके, बी केयरफुल. इट्स ओके आस्था, होता है. इट्स ओके, इट्स ओके. आई गेस दैट्स व्हाई you are guys are here watching this video because you feel कि this can add some value to you, right? I hope it did. Because see, a lot of you have said B on this one. ठीक है कि R is false because जल्दी से पढ़ने में ही आता है. और नीट में I was just talking to a few friends on Discord that the main thing is being able to read questions very very quickly. Okay, but reading quickly में you also have to read carefully. Okay, because देखो इन लोगों ने options जंबल कर दिए एक बात. और दूसरी चीज यहाँ पे जो एक छोटी सी लाइन है extensive और intensive, if you don't remember the definition आप लोग उल्टा भी बोल सकते हो, है ना? So anyway, option answer is D. Lakshya, that's right. Did everybody else understand how it's D? I don't mind spending some time on this. It's basic theory, but it's all right. Vaishnavi, Astha, Pravat, Lavanya, Radhika, Abhinandan and Mayuk, everybody who said B. Are you guys good as to how it's D? Utkarsh, all right? Yeah? All right. It's okay. Retract करने की कोई जरूरत नहीं. Answer is D. Saloni, good job. All right. ठीक है. Theory question. Just because I say something easy, that does not mean कि if you get it wrong that's a negative thing. नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मेरे हिसाब से मैं easy इसलिए बोल रहा हूँ because I want you to be able to solve these questions quickly after this session at least. Yeah? अगर पहला नहीं तो चलता है, but इसके बाद it should be very clear how to approach these questions. अगला देखते हैं. On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes, the product obtained at anode will be what? इसका बहुत बड़ा हिंट नीट 2020 का सवाल है. एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, या and cathode पे होता है reduction. That's all you need to solve this question. That is all you need to solve this question. ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ये इस चीज से डरिए मत. Don't get scared about the fact that there is dilute sulfuric acid. इससे क्या होगा? देखिए, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, थोड़ी सी थियोरी है. If you want to revise the theory of electrochemistry, tell me. I'll line up a couple of sessions in the next couple of weeks. जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, it has to happen either in an acidic और a basic medium. Reactions थोड़े से अलग होते हैं, but end result is the same. Okay, which means to say कि जो gases निकलती हैं on oxidation and reduction, they are the same. Okay, it's just that कि एक जगह H plus होता है, एक जगह OH minus होता है. थोड़ी theory मैं बोल रहा हूँ until I see some answers in the chat. What are you guys saying? Naman, that's how E cell is intensive. Okay, how you want to know how? So that's a bit of theory. I'll get to that. Just one sec, huh? Naman, I'll finish this question and I'll go back to that one because we're in the flow. हम लोग इस वाले कर लेते हैं, ठीक है? And does anyone else have the doubt of why E cell is intensive? Because that's hardcore theory, but it's alright. We can look at that. Pravat, Pravat is saying B. Astha is saying B. Neet is saying C. Sujal is saying A. Hey, Sujal, long time. Mayuk is saying dehydrating agent. Acha, okay, all right. Utkarsh, Avasthi, they've concentrated. So S2OH2 minus. Utkarsh, Bhaijan, what? Okay. Look at the options, guys, and take a call based on that. ठीक है? Oxygen is what Astha is saying. Radhika is saying A, which is hydrogen. या तो oxygen या तो वे होगा. Abhinandan is saying A as well. Vaishnavi is going with A. Utkarsh, I don't understand. हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? We got to focus. Mayuk and Utkarsh are all both giving the same things. S2OH2 minus. But देखो option में तो वो है नहीं, है ना? Option में नहीं है, then it doesn't. It's not something that you should be thinking about. I know you guys know a lot of theory, okay, but क्या चीज का कहां पे दिमाग में साइनेप्स बनाना है, कनेक्शन, साइनेप्स का कनेक्शन. I'm sorry, I should have done that. I know, bio guys, you know this much better than I do, right? But make those connections well and focus on the question at hand. Don't get distracted, okay? PY, especially NEET, you have so many questions, right? Focus, get the answer, move on.
खैर, ऑप्शन बी इज व्हाट सम ऑफ यू आर सेइंग, सम ऑफ सेइंग ऑप्शन ए. चलो, H2SO2 तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेट्स मार्क देम आउट. H2SO2 नहीं बन सकता है. The fact that there is sulfuric acid is just a distractor. What that means is acidified water. Concentrated H2SO4 बिल्कुल ही अलग चीज है, दुनिया अलग है. That's a different world altogether. Okay, because as your friends have said, उनका डायरेक्शन बिल्कुल सही है आकाश और मयूक का, कि concentrated H2SO4 में H2SO4 खुद हो जाता है break. Maybe it is a possibility theoretically. We're not going to talk about that right now. That's not important. Acidified पानी, that's all it is. So पानी का क्या होता है? At the cathode there will be reduction, at the anode there will be oxidation. पानी में हमेशा ऐसे होता है whether you have acidic or basic media. Okay, because acidic media है, so I have added H plus on this side and not water. मैंने पानी से start नहीं किया, started with H plus on this side and I get H2. How do I know this? Because I need to make sure कि electron add हो रही है at cathode. I need to make sure कि electron on the other side of anode, and to balance number of electrons, just multiply this whole thing by 2. ठीक है, दोनों जगह इस तरफ निकल रहा है हाइड्रोजन, इस तरफ निकल ऑक्सीजन. नाउ दिस इज द केस व्हेन यू हैव एसिडिफाइड वाटर, यानी कि थोड़ा सा आप H2SO डाल दो ताकि रिएक्शन एक्चुअली हो. ओके, कूल. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस? नाउ यू मे से कि अच्छा, अगर बेस में करें तो क्या होगा? इट्स द सेम थिंग. हम लोग थोड़ा सा थ्योरी में कवर कर लेते बिकॉज़ इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर बेस में करोगे, यूज द आइडिया ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस इन एन एसिडिक एंड अ बेसिक मीडिया. देखो, रेडॉक्स का आइडिया वी कैन यूज हियर वेरी इजीली. What do I do to do that? अगर मैं इसको करूंगा बेसिक मीडिया में, देन क्या करना है, इसको कैसे बैलेंस? आई ऐड 2OH माइनस ऑन दिस साइड, 2OH माइनस ऑन दिस साइड. ये इंटू 2 वाला भी भूल जाओ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इफ आई डू दैट, तब भी देखो H2 गैस ही निकल रहा है और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. सो व्हाट यू हैव इज H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2 प्लस OH माइनस. दैट्स व्हाट यू गेट, है ना? ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है? लेट्स थिंक. ओके, आई थिंक इट विल बी 2H2O नॉट H2. एक बार सोचने दो. और विल इट बी, क्या होगा? व्हाट यू गाइस थिंक? विल इट बी 2H2 और क्या होगा यहाँ पे? व्हाट यू गाइस थिंक? बिकॉज जैसे ही मैं यहाँ पे H2O ऐड करता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2OH माइनस. लुक्स लाइक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बट H2 इज डज नॉट सीम टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, we'll have to spend some more effort balancing it, but the idea is that कि देखो यही हो जाएगा, and इस तरफ if you add OH minus, then ये पानी हो गया कैंसिल और बन गया, बच गया आपके पास 4OH minus. Okay, so this is how you can do the same reaction in the basic media. I'm just giving you this as a bit of a hint as to how it doesn't matter whether it's acidic या basic media. The fact is कि end of the day आपको हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे, ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे. Okay, please don't mug this. ये चीज है theoretical and we've just figured it out. Okay, all right, ठीक है, cool. Shall we go on to the next one? ये जरूरी थियोरी थी. I spent a lot of time on this because I felt कि यहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा और coincidentally डिस्कनेक्ट था. A lot of you are saying hydrogen oxygen because आप लोग सोच रहे थे कि अच्छा मे बी एसिडिक मीडिया में कुछ और होता है, बेसिक मीडिया में कुछ और होता है. व्हाटएवर योर रीजनिंग वाज, आई होप आफ्टर दिस पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, बट नोट दिस, इफ यू आर ट्राइंग टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर, इट मस्ट बी ईदर एन एसिडिक और बेसिक मीडिया. विदाउट इट जस्ट रिएक्शन होता ही नहीं है. इट्स रिडिकुलस. Someone's talking about over potential, disruption, कुछ चीजें की बात कर रहे हैं, right? So it's very hard to electrolyze water without a little bit of acid, a little bit of base. Okay, let's go on to the next question. The E naught values of Al plus. This is very interesting. ये वाला थोड़ा सा interesting question है. NEET 2023. Okay, Al3 plus Al gives इसका जो आपका जो values दी गई है, Tl plus Tl, Al3 plus Al, Tl3 plus Tl. Tl is thallium, Al is aluminum. Same में नीचे indium, thallium, etc., etc. Identify the correct statement. Al is more electropositive than Tl. Tl3 plus is a good reducing agent than Tl plus. Al plus is unstable in solution. Tl can be easily oxidized to Tl plus than Tl3 plus. In fact, I think this question maybe belongs more to the P block elements, right? Specifically group 13. But it's okay. हम लोग जो है स्कैम करके इसको यहाँ पे कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है. ट्राई करो, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आइडिया से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यू मे से कि नहीं ये तो उसके ग्रुप एल्यूमिनियम ग्रुप वाला सवाल है. इट्स ओके यार, क्या फर्क पड़ता है. यू कैन डू दिस विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ट्राई इट आउट. आर वी रियली गुड? लक्ष्य सवाल का जवाब तो दीजिए, देन वील नो इफ यू आर रियली गुड. पहला वाला स्टेटमेंट मुझे तो डरावना लग रहा है. Al is more electropositive than Tl. Now, given this data, I have no way of figuring that out because Al, Tl ठीक है, may be more electropositive, but how do I know with this data? Maybe if I remember it, NCERT में पढ़ा है तो maybe सही होगा. But इस डेटा के साथ अजीब है बताना because Al more electropositive. Such a weird statement to make. You can maybe go about it saying कि because Al3 plus is more stable, then maybe it is more electropositive inert pair effect. बहुत चीजें आपके दिमाग घूम जाएंगी. तो अगर कोई ऑप्शन अजीब लगता है तो उसको छोड़ दो पहले. ठीक है, ditch it for now, ditch it. Okay, you've got to identify the incorrect statement. That's the main idea. Okay, Utkarsh is saying C. Okay, incorrect is asked for, so maybe C. Basha, nice to see you. I don't think I've seen you here before. You're saying B. Good job. Radhika is saying C as well.
ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ऑप्शन ए मुझे अजीब लग रहा है, तो आई विल फॉर नाउ ditch it. That's a beautiful thing about MCQs. Let's look at option B. TL3 plus is a good reducing agent. Is a better, अंग्रेजी अलग अजीब है, is a better, let's say better reducing agent, not good, better reducing agent than TL plus. अगर TL3 plus is going to be, अगर स्टेटमेंट का, let's assume the statement is true. If the statement is true, तो reducing agent मतलब it will get oxidized, correct? Reducing agent मतलब it's going to get oxidized. Okay, okay. So अगर TL3 plus becomes oxidizing agent, ये कहाँ ऑक्सीडाइज होगा भाई? Oxidize to what? What is it going to get oxidized to? If it's a good reducing agent, it needs to get oxidized to. But TL3 plus is the highest oxidation state. I don't think it goes beyond that. Khair, anyway, that itself is a red flag right there. And then you say better reducing agent TL plus. अच्छा, मतलब TL plus can become TL3 plus. And in fact, ये तो पॉसिबल है, बट दूसरा वाला पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेट्स लुक एट द TL प्लस एंड TL वैल्यूज, TL3 प्लस एंड TL वैल्यूज। ठीक है, तो इन दिस केस इट इज वेरी क्लियर कि ये जो उल्टा रिएक्शन है विच इज TL बिकमिंग TL3 प्लस, दैट इज क्वाइट लाइकली, ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि द ऑपोजिट रिएक्शन विल हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मतलब दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, सो अब तो ये अजीब बात हो रही है, तो ये उल्टा हो गया ना। सो TL प्लस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, मस्ट बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसी आइडिया से ये हो गया ऑप्शन गलत एंड बी इज द आंसर। डू यू सी दैट? जब तक मैं ये सब बोल रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे वी कैन एलिमिनेट डी विद इनर्ट पेयर, सो डी इज करेक्ट। अरे वाह उत्कर्ष, मेनी वेज टू सॉल्व द सेम आइडिया, बहुत अच्छा उत्तर आपने थियोरी से किया। मैं अभी जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन से भी आपको बता देता हूं जल्दी से। ठीक है, इन ऑप्शन से भी वी कैन फिगर दिस आउट। Al प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, Al प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। अगर Al प्लस अनस्टेबल है सॉल्यूशन में मतलब वो बन जाएगा वापस Al। सो लुक एट दिस, Al प्लस टू Al, दिस हैज अ पॉजिटिव E नॉट वैल्यू, तो E नॉट लिखा है पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसलिए ये सवाल है करेक्ट। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, डू यू गाइस सी दैट? Why Al plus is unstable in solution? वो बन जाता है, it gets reduced. Okay, Utkarsh, everybody else, yeah. The last one, TL can be easily oxidized to TL plus than TL3 plus. हाँ, ये तो obvious है ही, this is very obvious, right? TL can be easily oxidized, वो तो हमने अभी देखा, क्योंकि if you go from TL to TL3 plus, that is negative 1.26, बाप रे, ये तो बहुत ही नेगेटिव, काफी नेगेटिव है, मतलब this is non spontaneous, right? So this is not going to happen. Okay. The main reason as to why I can say very confidently that B is incorrect is because for TL3 plus to be a better reducing agent, it must have a higher oxidation state to go to, which it does not. Okay, इसलिए ये गलत है. Do you guys follow that? Yeah, it's okay, Mayuk. ये सवाल ऐसा है जब मैं भी छोड़ देता, अगर एग्जाम में होता भाई इतना सोचना नहीं है, टाइम नहीं है लाइफ में. If I was giving NEET, which I never have, I can never be in your shoes, but I can imagine, right? You got to do things very quickly. और अगर जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन इज टू स्किप इट. सो दैट्स वेरी गुड स्ट्रेटजी एज वेल. ओके, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो भाई डिच करो, इट्स ओके. ठीक है, सो दिस वाज आई फील स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस. हर ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना था. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड राइट अवे ये गलत है, दैट्स गुड, अदरवाइज यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट ऑन दिस. इज दिस ओके गाइस? यू आर ऑल राइट? सब ठीक है? अगला सवाल करें, कोई डाउट्स नहीं है, राइट? या shall we go on to the next question? I don't mind explaining this one for some time if you all want. Okay, this is the incorrect option. ठीक है, let's go on to the next one. The number of Faradays, अगला वाला डायरेक्ट है, बाकी वो सबसे मुश्किल सवाल था इस पूरे सेशन में. Now life will be easy. The number of Faradays F required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. Number of Faradays, इसमें क्या लिंक है? जल्दी बताओ, what is the link of Faradays and well charge and mass? कुछ तो लिंक है. It has to do with number of equivalents. Do you know this? Number of equivalent. One equivalent का definition ही यही है कि the amount of a substance that is removed when you pass 1 mole of electrons, which is 1 Faraday. So अगर 1 mole of electrons आप pass करेंगे, which is 1 Faraday, this is 1 mole of electrons, right? Charge on 1 mole of electrons, 96,500, etc. बहुत बड़ा चार्ज है, ridiculously large charge. That will give you 1 equivalent of the substance. तो कितने equivalents है 20 ग्राम कैल्शियम में, ये निकालना पड़ेगा बस. ओके,
G equal NFE. Okay, okay, okay. Prabhat is saying A. इसके पहले क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा क्लास क्लोज हो गया, नेटवर्क इशू था. सलोनी, वो सवाल थोड़ा सा बड़ा था. Can you maybe just rewind that and watch it? I will try and explain it. Let's go ahead and finish the rest. I will come back to that question in the end, Saloni, just to revise it one more time. Okay, cool. About the fact somebody else had asked me to repeat how E naught is intensive. Guys, you'll have to go through theory. Okay, how E naught is intensive, that's taught in theory. It's a little difficult to get into right now when you're doing these PYQs. Okay, but I told you intensive extension क्या idea. Intensive मतलब कि अगर point है, अगर point है, we can know exactly कि at that उसकी इंटेंसिटी क्या है वैल्यू. एक्सटेंसिव मतलब आई वोंट बी एबल टू टेल दैट. दैट्स हाउ आई डू इट. द अदर आइडियाज कि भाई मास से फर्क पड़ता है, मास से फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट्स अ जनरल आइडिया. खैर, इसमें क्या है, सब लोग बोल रहे हैं ए. राधिका, वैष्णवी, मयूख, नीट एस्पिरेंट, सलोनी आर ऑल सेइंग ए. मस्ट बी करेक्ट. ये वाला तो डायरेक्ट लग रहा है. 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मतलब 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि है भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के निकलते हैं व्हेन इट बिकम्स Ca2+, राइट. सो that's all, divided by 2 equivalent per mole. What you get is 20 gram per equivalent. That's the equivalent mass of calcium. So this is just one equivalent, मतलब 1 Faraday. That's it. हो गया ये वाला सवाल. So for Saloni, just quickly going back to the last question, just for about 30 seconds or so. Here's the idea, right? Tl3+, how do you identify कि ये गलत आंसर है? I mean, क्योंकि ये incorrect है, the right answer. For it to be a good reducing agent, it needs to have an oxidation number greater than 3+, right? 3+, what will it get oxidized to? Yeah, there is no 5+, 6+, this doesn't exist. So hence this one is wrong. बाकी चीजें you do using the whole idea of electronegative, the E naught का values. Please rewatch that question if you have a doubt in this. I've explained every option. ठीक है? All right, let's go on to the next question right now. Molar conductance of an electrolyte increases with dilution according to the equation. अरे बाप रे, बड़ी सी equation है. एक मिनट, ये तो आया था क्या? नहीं, hold on. ये वाला शायद नीट में नहीं आया था. उसको छोड़ दो. That ignore that question. That I could not find that so much. Okay, anyway, standard electrode potential for the cell with cell reaction, this chap right here, okay, is 1.1 volts. Let's look at this question. Calculate the standard Gibbs free energy change for the cell reaction. Try it out. ये वाला भी काफी डायरेक्ट है. What you've got to do is apply the good old equation. What equation? Nernst equation. Nernst equation? Well, not necessarily Nernst equation. Nernst के just पहले वाला step. Nernst equation होगा अगले वाले में. What is the basic idea for this? How do you relate thermodynamics and electrochemistry? Thermodynamics बोलता है कि देखो delta G is equal to delta G naught plus RT ln K equilibrium से, right? Then we say कि अच्छा delta G equal to minus NFE and इससे you get another expression and you say कि at equilibrium delta G equal to 0, right? And that is also known as death of cell. जब तक मैं theory बोल रहा हूँ लग रहा है कि chat में आप लोग कुछ बोल रहे हैं. उत्कर्ष, wow bro. Mayuk, which one? अच्छा, वो वाला सवाल. Which one are you talking about? The previous question? Yeah, I know. That was a hard one. Sujal is saying A for this one or last one? Sujal was saying A for the last one. Good job then. Utkarsh bhai बोल रहे हैं C. Abhinandan also saying C. Prabhat is saying C. Sujal C. Radhika C. A lot of you saying C. So looks like C must be the right answer, right? Direct one. So delta G naught equal to minus RTLN K. You can get that here. And minus NFE naught. That's it. Literally just multiply these guys together. Now from this, if you're doing it quickly, you can very clearly say कि भाई देखो इतना बड़ा नंबर है तो जूल तो नहीं होगा. ये दोनों हो जाते हैं, हट जाते हैं. These two get crossed out. So you have to pick between these two. इसको calculate करना पड़ेगा. Don't guess it. Okay, they are too close. 200 and 200 are very close. Don't guess thing like this. Please do this. So you do 2.2 into 96,500. ठीक है, that's what you do and you can get that answer there. All right, good stuff, good stuff, good stuff. Let's go on to the next question. अगला क्या है? Find the EMF of the cell in which the following reaction takes place at 298 Kelvin. आ गया Nernst equation का सवाल. Nernst equation का सवाल. Another direct application, but Nernst equation, I will tell you how you never have to mug this equation. एक डरावनी सी equation लगती है. We'll do everything from first principle. I showed you that delta G equal delta G naught plus RT ln K. बस उससे हम लोग सारा electrochemistry कर लेंगे पहला वाला half. Try it out, try it out, try it out. Vaishnavi, Neet were all saying C. Good job. इस सवाल को try करो आप please. Please try this one out. And I'm going to prove to you that you don't need fancy equations. Nernst equation is just a derivation of delta G equal to delta G naught plus RT ln K. I'll show that to you right now. What's happening here, guys? सब लोग बहुत शांत हो गए. ठीक है, देखते हैं. Okay, how about this?
Let me tell you the scammy way of doing this. The scammy quick way of doing this. Utkarsh, good job. This is the scammy quick way of doing it. देखो भाई, E naught at 10.5. Whatever you do, you're not going to reduce it by 10. ये options are very like unlikely कि तुम इतना ज्यादा कुछ effort लगाओगे. देखो, remember, this is 0.059. 0.059. मतलब अगर तुम 10 से ये निकालना चाहो, this RT ln K, not even RT ln K, RT by NF है ना, तो by N into C, the concentration should be equal to some 100. If you put 100 there, then ये घटेगा 5 से. I'll tell you what I mean. I'll show you the math. मैं equation दिखा के बताता हूँ कि ये possible ही नहीं है. It is just not possible for you to get B, C and D. A must be the right answer. This is a 15-second वाला question, okay? If you are comfortable with the maths and the equation, then you will like भाई ये तो हो ही नहीं सकता है. Must be A, सोचना ही नहीं है. Must be A, सोचना ही नहीं है. उत्कर्ष, concentration are same, but ध्यान से करने वाला सवाल है. Concentration are same, I agree, but ध्यान से करने वाला सवाल है. Okay, so I've written this equation down beautifully to be the Nernst equation. Now, how did I come to this? Let's discuss that very quickly. It'll take 15 seconds to derive this. Okay. देखो, ये आपने याद किया था, hopefully याद किया था at equilibrium thermo. That's all you need to know. उसके बाद you say कि अच्छा minus NFE equal to minus NFE naught plus RT ln K. अब देखो हो गए sign reverse, तो it becomes E equals to E naught. मेरे सर के पीछे I know, but you have the equation written down here as well. Minus RT ln K. अब ये ln K क्यों लिखा है? देखो K ही तो है ये. What is this? Ni2 plus by Ag plus whole square. That is K. What do I mean here? Ni2 plus concentration is key divided by Ag plus whole squared. This is K, guys. This is equilibrium constant, ionic equilibrium, chemical equilibrium. Nothing new. So देखो, Nernst equation not hard, very direct. इसके बाद look at this math. मैं यही बोल रहा था. इस math में whatever you do, right? अभी देखो ये concentration एक तो हो गई कैंसिल आउट, तो दिस इज बेसिकली 0.001 डिवाइड बाय 0.001 होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें ये हटाओ तो ये हटा दो, बच गया ये 0.001. नाउ इवन विद दिस, एक कॉन्सेंट्रेशन दूसरी की 1000 गुना भी कम हो गई इन दिस टर्म ओवर हियर. इवन देन ऑल इट अमाउंट्स टू 10.5 माइनस 0.059 इनटू 3/2. बस. तो सोचो, अगर तुमको निकालना था 9 इसमें से, लुक एट दीस वैल्यूज. सो अप्रोक्सीमेटली यू नीड टू रिमूव 8 फ्रॉम हियर. So to get 8 over here in this factor, I have to multiply this factor 3 has to be something like 40. Okay, it has to be something like 40 because once it becomes 40 then ये हो जाएगा 20 and 20 होने के बाद भी भाई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, think about it. 20 मतलब 5 into या 0.5 into 2, भाई कुछ नहीं बदलेगा. Look at that. You see the math? You see the math? Exactly. It's too little of a difference. Remote even, what's up? Hey Jammu guy. Poonam, yes. Sujal, absolutely right. I wanted to spend time on this question because you have to appreciate this. अगर एग्जामिनर आपको ये बहुत क्लियर हिंट दे रहा है कि देखो यार ये आसान सा सवाल है, मार्क करके चले जाओ, बट दैट विल हैपन ओनली इफ यू हैव स्टडीड दिस इनसाइड आउट. एंड वी हैव स्टडीड इनसाइड आउट. 5 मिनट में वी हैव स्टडीड इनसाइड आउट. देखो, है ना, क्या चाहिए इसमें? इट्स डूएबल, राइट? आर यू गाइस कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर और नॉट राइट नाउ? लेट मी नो इन द चैट. ये कर पाओगे? एनीथिंग ऑन नर्स्ट इक्वेशन राउंड विल बी डूएबल. यस, प्लीज टेल मी इन द चैट. ओके, कूल. 10.385 इज आंसर. आंसर बहुत आसानी से आ गया, बट वो अप्रिशिएट करना जरूरी है. ऑसम, ऑसम, फ्री मार्क्स, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. लास्ट सवाल, एक दो सवाल और हैं. वी आर आउट ऑफ टाइम. इफ यू गाइस कैन स्टिक अराउंड, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. दीज आर वेरी डायरेक्ट एज वेल. ये वाला डायरेक्ट है, इसका नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन है. द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CHCCO at infinite dilution are this and this. कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. The molar conductance of CHCOH at infinite CHCOH at infinite dilution is what? देखो, this is just arithmetic. You need to make sure that you account for stoichiometry इसमें. ठीक है? The idea of molar conductivity at molar conductance at infinite dilution is that you assume कि ये particles इतने far apart हैं that they don't interact with each other. इसीलिए you can directly add or subtract their molar conductivities. ठीक है? How do you do this one? अरे वाह उत्कर्ष, जल्दी से जवाब देते हुए और बहुत ज्यादा लिखते हुए. अभिनंदन, मयूख, उत्कर्ष, अरुण are all saying C. Cool, Roshlau, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम. Sure, sure, sure. What do you do? CH3COH कैसे बनता है? You take CH3CONA, उसमें से हटा दो Na, बट Na हटाने के लिए Cl भी हट जाता है, तो फिर ऐड कर दो HCl और ऐड कर दो H. ठीक है? That's what's happening over here. If you want me to walk you through what we did. So you add this because this is what I need to get. I subtract this because I want to get rid of Na. But by getting rid of Na, I also subtract Cl. So I need to add Cl.
and doing that, luckily, you also add H and you get the whole compound CH3COH. That's it. So minus 91 plus this thing, बस साइंस का ध्यान रखना, 426 और 126 तो ये बन गया 300, 390, 390, खत्म. Answer is C. Good job, Radhika, Prabhat, Vaishnavi, Pradeep and Neet as well. What's up? All right. अगला वाला सवाल, वो looks like ये last सवाल है. Looks like ये last सवाल है. जल्दी से कर लो, and actually we'll just finish in a minute's time. जल्दी खत्म कर देंगे on time. Molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is some value, और बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, Siemens centimeter square per mole. This is the same as mho or 1 by ohm. ठीक है, S is basically that. What is the dissociation constant of acidic? भाई मतलब Ka निकालना है. अच्छा, 2021 में पूछा गया. तो this is a time taking question as compared to the other questions. Not really time taking, but थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा. अरे आप लोग ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं जल्दी. अच्छा, सेफ. Okay, Saloni is saying C on this one. Okay. देखते हैं इसको कैसे करेंगे. How do you do this one, guys? The starting point is that alpha is equal to the given value of molar conductivity, which is this guy here. Let me put here. Yeah. So lambda m divided by lambda not m. That is the starting point. Okay. उसके बाद तो बहुत चीजें, everything just falls into place. Chemical equilibrium is never leaving you guys, especially in electrochemistry. जरूरत है इसकी, right? Kumar is saying D. कुमार ध्यान से ट्राई करो, एक बार देखो, चेक योर कैलकुलेशन. गुड जॉब ऑन द अटेम्प्ट, बट ट्राई द कैलकुलेशन एक बार देखो. सैफ इज आल्सो सेइंग डी. ओके, लेट्स सी, मे बी इट इज डी. देन ट्राई करके देखो. सो द मेन आइडिया हियर इज लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू 50 प्लस 350 व्हिच इज सिंपली 400. हाउ डिड आई गेट दैट? देखो 350 H प्लस का, 50 है CH3CO माइनस का, दोनों को ऐड कर दो. Ka क्या होता है? C alpha square by 1 minus alpha. How did I get this? Because of this. ये केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने जल्दी से लिख दिया है. आई होप दिस इज फाइन, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है. अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 by 400. क्यों? बिकॉज अल्फा इज आल्सो लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m. इसी फॉर्मूला से यू जस्ट गॉट, दिस इज गिवन टू यू. ओके, तो ये मिल गया. अगर मिल गया अल्फा तो आप निकाल सकते हो के कापा कापा नहीं, के निकाल सकते हो, राइट? जस्ट सब्स्टिट्यूट थिंग्स इन देयर. आर यू श्योर इट्स डी गाइस? आर यू श्योर इट्स डी? देखते हैं. So what I've got over here is this guy over here. ठीक है, 0.007 concentration into 1 by 20 whole square divided by 1 minus 1 by 20. ये 1 minus 1 by 20 हम लोग I think we can ignore it. या इसको इग्नोर कर ही देते हैं. Let's see क्या होगा, देखा जाएगा. तो ये बन जाता है 1 by 400. ओके, 1 by 400 into 0.007. और कुछ बचा क्या? बस यही है. तो अगर इसको यहाँ पे ले आए तो ये 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 7 by 4 into 10 power minus 5. यही हो जाएगा ना. दिस एक्सपोनेंट वे ऑफ डूइंग इट. तो ये 7 by 4 and 10 power minus 5 मतलब 1 point, मतलब ऑलमोस्ट 2 से थोड़ा कम, राइट? ऑप्शंस क्या है? एक्सीलेंट वर्क. डी इट इज. गुड जॉब. None of you took the bait. Good that you stuck to your guns. Kumar, Saif, Master Blaster giving answer is C. Master Blaster, I hope you know how it's that it's right. What the right answer is. Prabhat, good job. Saif, Utkash, Radhika, Master Blaster changed their thing. अच्छी बात है. Vinod, Vaishnavi as well. Beautiful, excellent, all brilliant. चलो, with that we are done with this session. Another one done. Electrochemistry done and dusted. And देखो हमने कितनी बड़ी बड़ी थियोरी वाली बातें कर ली जो आपको कभी कभी मे भी डर लगता होगा. I hope now you found that electrochemistry is a very doable chapter and you will definitely get whatever question gets thrown at you from here. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर. सॉल्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग ट्यूसडे को. विल कंटिन्यू दैट. कैट आयंस का आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ के आना. गुड नाइट, बाय. ओ, दाल में कुछ काला है क्या? दाल में काला है. किसी को कुछ चाहिए? बाय द वे, नॉट दाल. Somebody wanted a explanation of some question, right? You guys can carry on. अगर कुछ explain कर रहा है, then I can stick around for 5 more minutes. But I feel you can look at the question Saloni. Saloni asked, right? Just एक बार देख लेना. If you don't understand it, just ping me on I teach Chem on Discord or Telegram. Yeah, that's my ID there. I'll try and guide you to the right resource. Okay? All right. See you. Bye bye. Good night.